Before we start today's episode, I want to give a quick shout out to Zencaster, which is a podcaster's best friend. Trust me when I tell you this, Zencaster is like a Shopify for podcasters. It's all you need to get up and running as a podcaster. And the best thing about Zencaster is that you get so much stuff for free. If you're planning to check out the platform, then please show your support for the Founder Thesis podcast by using this link, zen.ai/founder thesis. That's zen.ai/founder thesis. Hi, I am Sumit Agarwal. I am founder and CEO at Vyapar. एक मिनट रुक जाओ, रेडी होने दो. चलो ये कर लेते हैं. दिस कुड बी अ ग्रेट इंट्रो. There's nothing as inspiring as a story about life coming full circle, and the story of Sumit Agarwal, the founder of Vyapar, is one such inspirational story. He is the son of a retail store owner who ended up creating an app that has helped millions of retailers, traders, and SMEs to manage their financial health. Sumit got an engineering degree and spent almost a decade at the India offices of Intuit, the American fintech giant, where he learned all about building tech products. But the itch to do something of his own was strong, and a casual weekend project ended up becoming the Vyapar app, which is India's leading expense and invoice management app for SMEs and was most recently valued at almost 900 crore rupees. Here's Sumit telling Akshay Datt about the journey of building Vyapar app through frugal innovation and first principles thinking. What did you build? तो we built Vyapar only. तो हम लोगों ने पहला वर्जन डाला और प्ले स्टोर पर डाला. दैट वर्जन वाज उसमें बेसिक चीजें होती थी, केवल सेल, परचेज, मनी इन, मनी आउट और एक्सपेंस, केवल बेसिक चीजें. नो इन्वेंटरी, नथिंग. सो फॉर And this was like as a hobby you did that. Matlab, you yes, hadn't yes, I quit your did job I and didn't this quit the that. job, and as a part time for learning and for building and how to put an app on Play Store and to provide something to our cousin brother. वरना वो बाद में गाली देता कि यार तुमने एक छोटा सा काम बोला वो भी नहीं किया. किस काम के इंजीनियर हो तुम लोग. So I and John, we both did not know how to do Android programming and all, क्योंकि हम लोग C++ और उस पे काम करते थे. तो we learned Java, we learned Android development, और फिर हम लोगों ने वो बना के उसको एक महीने में एक प्रोडक्ट दे दिया. So that was the first time then that the app went on Play Store. So that was how the idea of Vyapar was born. नहीं, but फिर वो हॉबी से फुल टाइम बिजनेस तो कैसे अब बदल? उसमें क्या हुआ कि फिर हमने प्ले स्टोर पे डाला. अब प्ले स्टोर पे डालने के बाद जब प्ले स्टोर पे आप डालते हो कोई भी चीज, तो कुछ तो लोग डाउनलोड कर ही लेंगे. अगर आप केवल एक ऐप डाल दो जो कि केवल क्लिक करो, टेक्स्ट मैसेज दिखा दे, वो भी डाउनलोड हो जाएगा, राइट. तो कुछ लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर रहे थे. मतलब 8 से 10 इंस्टॉल्स आते थे. पहले दो तीन आने लगे, फिर धीरे धीरे 8 से 10 इंस्टॉल पर डे आते थे. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि जितने भी लोग इंस्टॉल करते थे उनको कॉल, आई यूज्ड टू कॉल ईच वन ऑफ देम एंड आस्क देम कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो बताओ, क्या और चाहिए इसको इम्प्रूव करने के लिए. आई यूज्ड टू डू दैट, रेगुलर. वॉइस ऑफ कस्टमर. Exactly, you can say that. तो whatever feedback I used to get from customers, तो हम और शुभम धीरे धीरे पार्ट टाइम में अपना बिल्ड करते रहे. और धीरे धीरे करके विदाउट स्पेंडिंग इवन अ सिंगल रुपी, दिस इंस्टॉल बेस स्लोली एक्चुअली रीच्ड अराउंड 100 to 150 पर डे. दिस कंटिन्यूड टिल अराउंड सितंबर 2016. तो हमने 2015 में लॉन्च किया था. 2015 दिसंबर में प्ले स्टोर पे डाला था. It took around 8 months for it to actually get to some traction, क्योंकि तब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम जॉब छोड़ के ये कर पाएंगे. क्योंकि आई ऑलरेडी had quit my job like 1 year back, 6 months back, और I had a son. तो I was already married, had a son. Home loan भी था, so all those things are there. तो I did not have guts कि मैं बिना कॉन्फिडेंस के छोड़ दूँ. तो फिर उसके बाद जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब चल सकता है, देन आई सेड टू माई सेल्फ कि ठीक है, इस पे फाइट मारते हैं, जो होगा देखा जाएगा. आई सेट असाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ माई सेविंग कि इतना खर्च करेंगे, इतने में अगर बिल्ड हो गया तो ठीक है, वरना आई विल गेट बैक टू जॉब. एंड दैट अमाउंट वाज रफली 12-13 lakhs. आई सेपरेटेड फ्रॉम माई सेविंग्स कि यार इतना अमाउंट मैं खर्च करूंगा, क्योंकि आई वाज रनिंग ऑन हाफ ऑफ द सैलरी ऑल्सो. क्योंकि इस पॉइंट में आई डिड नॉट गेट द सेम सैलरी, राइट. तो आई वाज गेटिंग Yeah, they would have promised you equity in place of Exactly. cash. तो सैलरी भी ज़्यादा नहीं आ रही थी. तो फिर
आई सेड कि ठीक है, अभी मेरा खर्चा चलाने के लिए मेरे पास 1 साल के लिए इतना पैसा बचा हुआ है, जिससे मेरा एक्सपेंसेस हो जाएंगे, और 12 लाख रुपए मेरे पास है जो कि मैं इन्वेस्ट करूंगा इसमें, एंड आई विल सी कि कुछ होता है कि नहीं होता है, तो आई विल गेट बैक टू माई जॉब। नहीं तो आपको दिख रहा था कि लोग यूज कर रहे हैं, बट कोई मोनेटाइजेशन का पाथ तो था नहीं, तो डिड यू थिंक दैट यू विल रेज फंड्स क्योंकि लोग यूज कर रहे हैं एंड देन फिगर आउट मोनेटाइजेशन? तो मोनेटाइजेशन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था। कॉन्फिडेंस कैसे आया था कि वी यूज्ड टू आस्क कस्टमर्स, एंड लॉट ऑफ कस्टमर जो यूज कर रहे थे ना, वो बोलते थे, क्योंकि उनसे रेगुलरली बात करते रहते थे, तो बोलते थे कि तुम चार्ज क्यों नहीं कर रहे हो, इसके 500-600 रुपए साल के लोग आराम से दे देंगे, यू शुड चार्ज, यू शुड गेट एटलीस्ट 200-300 रुपीज यू शुड चार्ज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वी यूज्ड टू से दैट। तो वी डिसाइडेड कि ठीक है, मतलब पीपल आर सेइंग, तो लेट्स ट्राई इट। व्हेन आई टॉक टू कपल ऑफ फ्रेंड्स हु आर ऑलरेडी इन द स्टार्टअप, राइट, दे वर सेइंग कि यार मोबाइल ऐप के लिए कोई पे नहीं करेगा। तो आई मीन इट वाज रिस्की जर्नी। आई सेड कि ठीक है, यू आर सेइंग कि लोग कह रहे हैं कि नहीं पे करेगा, आई बिलीव कि पे कर देंगे लोग, तो ट्राई करके देख लेते हैं। So then in 2016 I left the job, started hiring couple of people from my savings, और उस समय हम जब हायर करते थे तो वही सैलरी ब्रैकेट हमारा 20-25 हज़ार रुपए होता था, उससे ज्यादा हम पे नहीं कर सकते थे। तो You were hiring techies, right? Like to हमने डिजाइनर भी हायर किया, एक डिजाइनर हायर किया, एक मार्केटिंग के लिए को फाउंडर, आई गॉट वन को फाउंडर इनटू द टीम। she agreed to work on a lower salary rate, तो that's how we were doing it। और फिर हमने 2-3 लोग और हायर किए, तो स्लोली वी स्टार्टेड बिल्डिंग दैट एंड डिसाइडेड। फिर हमने मार्च 2017 में प्रोडक्ट को पेड बना दिया। तो पेड बनाने के लिए वी हैव टू इंप्लीमेंट दैट बैक उस टाइम तक कितने डाउनलोड्स हो रहे थे? Like by that time, ऑलमोस्ट what was सेम ही the होगा, numbers? 200 डाउनलोड के लगभग होगा। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, पर ऑलमोस्ट ये वही होगा, उससे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि यू नीड मार्केटिंग स्पेंड टू डू दैट, राइट, एंड हम लोग मार्केटिंग में कुछ स्पेंड करने के लिए बजट था नहीं, तो जो ऑर्गेनिक होता था वही होता था सब। तो इन मार्च 2018 sorry 2017 here, March 2017 we made the app paid, कि उसमें 30 डेज का फ्री ट्रायल रहेगा एंड देन यू हैव टू पे। बट जैसे ही हमने लाइव किया, फर्स्ट डे आई गॉट 8 पेमेंट्स, एंड दैट वाज आई थिंक द बेस्ट हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। कि हमने शाम को करीब 5 बजे लाइव किया था, एंड रात में 12 बजे तक 8 लोगों ने पे कर दिया। तो वी सेड कि चलो, मतलब लोग पे करेंगे। हाँ, ये किसके लिए था? Was it for traders? Like for traders to manage their business? Like कि क्या सप्लाई हुआ है, किस वेंडर को पे करना है, आगे क्या बिका है, वो मतलब इन्वेंट्री एंड correct. It was basic. Most of it was basic invoicing and very crude accounting, inventory management. Like very basic. The starting सब समझ लो। This was essentially like a, you can say, quick books for You Bharat can say that. You can say in that. a way. मतलब No, like at the starting stage, yes, obviously. yes. मतलब It is still that only, if you can say. तो लेकिन हमने जब बनाया था इसको, तो हमने 2 प्रिंसिपल्स वी ट्राइड कि वी विल फॉलो दोस प्रिंसिपल्स फॉरएवर। एक, कि प्रोडक्ट जो बना है वो बहुत सिंपल होना चाहिए, दैट एवरीबॉडी कैन यूज, मतलब इवन अ 10th ग्रेड पास हु इज रनिंग अ बिजनेस शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यूज इट। सेकंड, कॉस्ट शुड नॉट बी अ रीजन टू मूव टू टेक्नोलॉजी। तो कॉस्ट हमेशा लो रखना है और ज्यादा वॉल्यूम पे लोगों को लेके आना है, क्योंकि ज्यादा कॉस्ट हुआ तो कम लोग यूज करेंगे, एंड वी डोंट वांट दैट। वी वांट मोर पीपल टू यूज द टेक्नोलॉजी, क्योंकि आई हैव सीन इन माय फैमिली इटसेल्फ की मतलब कितना लॉस हो जाता है, उसके बाद पता चलता है 6 महीने बाद कि अरे शिट, हम तो लॉस में चल रहे थे, बिकॉज देयर इज नो अकाउंटिंग ऑफ इट, राइट। तो वो उसको उस तरह से अकाउंटिंग को मैनेज करना और मेंटेन करना बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है अगर आप पेपर पे कर रहे हो तो। हाँ, right. Okay. But because you understood the pain area of that category, so you wanted to make sure that you're really solving that pain और area. हमने सिंप्लिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट रखी। तो सिंप्लिसिटी के जो सीड्स हैं मेरे अंदर, वो एक्चुअली इंट्यूट नहीं बोए थे, इंट्यूट डिड दैट आई वुड से। बट आई मीन कल्चर वाइज आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट, but how the product should look like and how it will be built and how it will
हाउ पीपल आर गोइंग टू यूज इट, वो सब हम लोग खुद डिसाइड करते थे. दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट टुडे. So this is how it was, and obviously you will all कि हमने रेस करने की कोशिश नहीं की क्या, तो आंसर इज यस, हमने बहुत रेस करने की कोशिश की. बट उस समय वो जो मार्केट था या अंडरस्टैंडिंग थी एमएसएमईज की, उसमें बहुत क्लियर परसेप्शंस थे इन्वेस्टर कम्युनिटी में. एक था कि बिजनेसमैन डोंट पे फॉर द सॉल्यूशन, दैट इज वन. सेकंड कि बिजनेसमैन को आप ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते, फील्ड में जाके सेल करना पड़ेगा, और 500 रुपए का प्रोडक्ट कभी भी सेल हो ही नहीं सकता ऑनलाइन. राइट. तीसरा, ये बिजनेस स्केल करना बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी लोगों को कि एमएसएमई कितना बड़ा मार्केट है, क्योंकि उसके बारे में उस समय कोई बात भी नहीं करता था. एक्चुअली नोबडी यूज्ड टू फोकस ऑन द एमएसएमई इन द 2016 17 टाइम फ्रेम. ये जो जीएसटी के आने के बाद चीजें चेंज होना शुरू हुई है. Right. Okay. So, like 17, you made it paid, but were you earning enough to meet your तो expenses, like to pay the तो salaries? एक महीने के लिए वो प्रॉब्लम रही, लेकिन उसके बाद द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी वर गेटिंग फ्रॉम द बिजनेस और जो हम स्पेंड कर रहे थे वो ऑलमोस्ट सेम था. इन द सेंस दैट ब्रेक इवन टाइप का कह सकते हो. ऑब्वियसली इट इज नॉट गुड टू बी स्टेट दैट इन एट दैट टाइम, बट यू नीड टू सर्वाइव टू ग्रो. राइट. अगर सर्वाइव ही नहीं करेंगे तो ग्रो कहाँ से करेंगे. तो उस समय रफली अराउंड 4 लाख रुपए का हमारा रेवेन्यू आने लगा था महीने का, और ऑलमोस्ट उतना ही हमारा खर्च होता था. तो मतलब जो Okay. जो And क्या मैं pricing बताता थी हूँ, तो इसकी? एक मैं इसके साथ आई वाज जस्ट ट्राइंग टू ऐड वन ज्ञान दैट आई यूज्ड टू गेट फ्रॉम माय फादर दैट आई अप्लाइड हियर, कि पैर नहीं फैलाने चाहिए जितनी बड़ी चादर है. तो अ, तो जितना रेवेन्यू आ रहा था उसके हिसाब से ही एक्सपेंस करते थे जब तक फंडिंग नहीं आती. Right. Okay. And क्या pricing 500 थी, रुपए मतलब 500 what were you charging? रुपए साल का पर सब्सक्रिप्शन. Okay. तो मतलब you were earning 4-5 lakhs, so about मतलब maybe हाँ, 1,000 paid करेक्ट. subscriptions per month. 1200 के लगभग हम लोग पेड सब्सक्रिप्शन लेके आते थे. फिर धीरे धीरे करके ये रेवेन्यू करीब 12 लाख तक पहुंच गया था. बट टिल दैट टाइम वी हैड नॉट गॉट द फंडिंग. तो कब तक हुआ 12 लाख? मतलब 2017 में ही हो गया था. 2017 दिसंबर तक वी रीच दैट नंबर. बट Amazing. मतलब you almost tripled in those हाँ, 9 months. बट वो वॉल्यूम इतना छोटा है कि उससे कुछ हो नहीं रहा था. एंड एट 12-13 लाख वाला रेवेन्यू वी गॉट स्टैग्नेटेड ऑलमोस्ट. मतलब फिर वो 6 महीने तक सेम ही रहा, उसके ऊपर कुछ बढ़ नहीं रहा था. पैरेलली इन 2017 इटसेल्फ आई आल्सो साइंड अप फॉर एक्जिलॉर. तो हमारी सिक्वायर से बात होती रहती थी. तो सिक्वायर में वन पर्सन एक्चुअली रिकमेंडेड अस कि यार तुम एक्जिलॉर में चले जाओ, सिक्वायर में तो तुम्हारा फंडिंग आसान नहीं है जिस स्टेज में तो वो. Then he referred us to Exilor Ventures, that is one of the incubators in Bangalore. So we signed up for that. And Okay. मतलब they invest in like a हाँ, seed. मतलब बहुत early stage investments करते हैं. And it is not only it's less about the investment. They invest only in specific cases, but they help, right? And they correct. क्योंकि अभी तक मतलब एक But where was the company based? You were हाँ based in बेंगलोर में, Bangalore. क्योंकि मेरे जॉब भी बेंगलोर में था, हम सब बेंगलोर में ही थे. तो मतलब my brother-in-law was also in Bangalore. तो yes, तो वो भी बेंगलोर में ही थे. तो we went into that accelerator program. फिर वहाँ पे जाने के बाद से आई वुड से कि हमारा आगे की ट्रेजेक्टरी पूरी चेंज हो गई. सो द वे इट चेंज्ड इज कि पहली बात तो वी गॉट गुड गाइडेंस कि व्हाट प्ले स्टोर पे क्या नंबर्स होने चाहिए, कितना इंस्टॉल्स होना चाहिए, व्हाट इज योर कन्वर्जन रेशियो. मतलब क्योंकि वी आर नॉट, आई वाज प्योरली फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राइट. मतलब वहाँ पे 8-9 साल वहाँ पे बिता के आए थे. तो आई हैड नो कनेक्ट्स, नो फ्रेंड्स इन स्टार्टअप सर्कल, नथिंग, राइट. तो यू आर लिविंग इन अ साइलो. तो एक्जिलॉर में जाने के बाद वो कनेक्टिविटी मिली, ट्राई टू काफ़ी कुछ लर्निंग मिली कि क्या राइट मैट्रिसेस हैं. वहाँ पे जाने के बाद वी रियलाइज्ड कि वी आर डूइंग रियली गुड बिजनेस. मतलब ऐसे बिजनेस इस स्टेज में होते ही नहीं है.
उससे पहले तो हमें लग रहा था कि मतलब क्या ही चल रहा है, कैसे आगे कैसे बढ़ेंगे। You know? Right. Okay. Mm. Like, what are some of those key things that you learned? For people who want to run like a app-based business, like what are the metrics? तो पहली बात तो वी लर्न कि यार प्ले स्टोर ऑप्टिमाइजेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, राइट। तो प्ले स्टोर ऑप्टिमाइजेशन हम लोगों ने काफी सीखा वहाँ पे। Which is basically like improving Improving discoverability. discoverability, मतलब correct. कोई सर्च कर रहा है, like कोई क्विक बुक सर्च करे तो उसको व्यापार भी दिख जाए, एग्जैक्टली things like एग्जैक्टली। that. फिर अगर कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर सर्च कर रहा है तो उसको व्यापार भी दिखना चाहिए, तो वो सब चीजें वहां पे सीखी। फिर प्रोडक्ट की मेट्रिक ट्रैकिंग, कि क्या चीज ट्रैक करने की जरूरत है, क्या कैसे ट्रैक कर सकते हैं। दे कनेक्टेड अस टू लॉट ऑफ टू क्लेवर टैब। तो क्लेवर टैब पे हमने ट्रैकिंग शुरू की टू सी एक्चुअली हाउ इज आवर बिजनेस इज परफॉर्मिंग, हाउ आवर यूजर्स आर यूजिंग इट, क्योंकि उसके पहले वी वर नॉट यूजिंग एनी ऑफ द प्रोडक्ट। तो दे गेव अस सब्सिडाइज्ड रेट, जितना हम, क्योंकि हम पे नहीं कर सकते थे ज़्यादा। तो क्लेवर टैब गेव अस वेरी वेरी सब्सिडाइज्ड रेट कि ठीक है, मतलब यूर स्मॉल बिजनेस तो यूज़ कर लो। तो लॉट ऑफ थिंग्स हेल्प्ड फ्रॉम दैट एंगल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैपेंड इज अब आफ्टर दिस वाज कनेक्ट टू द इन्वेस्टर्स, क्योंकि मेरा कोई कनेक्ट नहीं था, राइट। आई जीरो कनेक्ट। तो मेरा एंड आई ऑल्सो डिड नॉट नो कि मैं पिच कैसे करूँ। आई हैड ओनली सीन फ्यू डेक्स that were shared by my friend in Spoil when I was working there. तो उसके अलावा पिचिंग का पिच कैसे करते हैं, क्या इन्वेस्टर्स देखते हैं एक्चुअली में, व्हाट आर द मैट्रिसेस दे विल लुक एट, व्हाट मैट्रिसेस इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो वो सब अंडरस्टैंडिंग वाज नॉट देयर, राइट। सो एक्सिलॉन हेल्प्ड अ लॉट इन डिफाइनिंग द स्टोरी आल्सो, कि हाउ डू यू पिच, हाउ डू यू यू नो पुट द राइट मैट्रिसेस एक्सेट्रा, एंड most important, connect to the investors. So what are your learnings, like how to pitch? Matlab, if you have to give advice to someone on how to pitch, so what will you recommend? So it depends on the stage. ठीक है, जैसे if let's say I'm a seed stage, yeah, very very early stage, right? That the more anyway investors will look at only purely couple of things. One is कि what is the market size that you're solving for? How far you are from achieving the product market fit? कि मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट का डेफिनेशन ये है कि इफ लेट्स से एनपीएस स्कोर इज हाई, बेसिकली व्हेन प्रोडक्ट हूएवर इज यूजिंग इट दे रियली नीड इट, उसका चर्न रेट बहुत मिनिमल है। चर्न रेट कितना है, एंगेजमेंट कितना है, मतलब पेड प्रोडक्ट है तो रिन्यूअल होना चाहिए, और अगर फ्री प्रोडक्ट है तो यूजर एंगेजमेंट कितना है, राइट। तो मेरे एंड थर्ड इज कि अगर बिजनेस को स्केल करने के लिए, कस्टमर बेस एक्वायर करने के लिए कितना कॉस्टली है वो एक्वायर करना, ओके, राइट। तो मतलब 3 things broadly, like कि मार्केट कितनी बड़ी है, like सेकंड इज के क्या आपका प्रोडक्ट उस मार्केट की नीड कितनी सॉल्व कर रहा है, एंड थर्ड इज कस्टमर एक्वायर करना, like competitive landscape in a way that मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट would depend on not necessarily, it depends on the behavior of the customer also. जैसे कि आपके प्रोडक्ट इंटरप्राइजेस प्रोडक्ट है कि मतलब हर एक को जाके डेमो दे के एक्सप्लेन करके एक्वायर करना है, या डिजिटली आपने प्रोडक्ट का केवल मार्केटिंग किया और यूजर डाउनलोड करके एक्वायर हो गया। तो कॉस्ट वेरीज, राइट। आई मीन फॉर मी प्रिंसिपली दीज आर द 3 थिंग्स। बाकी चीजें, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर द थिंग्स इन माय ओपिनियन कैन बी बिल्ट ओवर टाइम, क्योंकि अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, मतलब आपने सही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है, तो आप कितना भी बड़ा मार्केट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अडॉप्ट ही नहीं होगा, राइट। अगर कस्टमर रुक नहीं रहा है प्रोडक्ट पे, तो कितना भी बड़ा मार्केट हो फर्क नहीं पड़ता, उससे आपको प्रोडक्ट ठीक करना पड़ेगा। अगर मार्केट छोटा है तो कितना भी बड़ा प्रोडक्ट है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यू वोंट बी एबल टू स्केल द बिजनेस। So these 3 things are the core to build a large business. I think this is the reason why investors look at these 3 things principally. Did investors see this as a big market, like accounting software for traders? So there were 2 legs to it. Understanding of that part कि accounting software in itself SaaS कितना बड़ा बनेगा, तो वो समय लोगों को नहीं समझ में आया था। But the pitch that we used was कि accounting software is the, क्योंकि हमारा engagement high था, user engagement was very high, right? जो लोग यूज कर रहे थे they were using it good, very really well. तो हमारा pitch ये था कि when the users start using it, then they are, apart from the software,
there will be other services that we can sell to the same customer base, like insurance, like lending, like inventory fulfillment, a lot of things that can be done on top of the current. ये उस समय की बात है. अब I can confidently say software itself is a large business. So things change over a period of time. But लेकिन वो उस समय how people are looking at it is the question. अब जैसे 500 रुपए का हम प्रोडक्ट सेल कर रहे थे उस समय पे, अगर हम बोलते हैं कि 500 रुपए से 1 बिलियन का बिजनेस बन जाएगा तो क्वेश्चन रहेगा कि नहीं बन सकता, राइट? लेकिन अब अगर अब हम 3000 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई 5 बिलियन का बिजनेस बन सकता है. तो it depends on all those mathematics that you have to do to figure out whether it is practically or theoretically at least possible or not. Okay. So did this lead to funding going through the Yes, it did. So we raised our first round of fund in 2018 June. तो हम लोग we started looking out. काफी सारे funds ने बात की. Maximum did not show interest, obviously, which is the part of the journey. Okay. So whom did you raise from? Like institutional or angels? Yeah, not angels, institutional. First round we raised in 2018 from Idea Quotient. Idea Quotient was the first investor who showed the interest, and they participated, and then Exelor also participated in the round. There was one more angel investor who also participated. He was like a mentor in Exelor, so he understood our business, and he was bullish that I also want to put the money in Vyapar. Yeah. And how much did you raise? We raised 6 crores. First round? Went around roughly around 1 million at that time. So which would give you what, like what? Around 2 years. So it gave around 1.5 2 years of runway. But I mean, since after raising that amount, we were doing well. फिर उसके बाद हम लोग almost एक साल में we reached to 40 lakhs of 30 to 40 lakhs of monthly revenue. तो उसके बाद फिर how did the jump happen? मतलब like that's like again a 4x. आप 10-12 लाख पे थे, उससे 40 lakhs वो कैसे हुआ? मतलब 3-4 दो reasons थे उसके jump होने के. एक तो पैसा आने से we started doing marketing spend, तो उससे number of users जो आ रहे थे वो बढ़ गए. Second, in top of the funnel बढ़ गया. That was one reason. Another was कि हम लोगों ने desktop product launch किया था 2017 जून कह रहा हूँ, तो वो फर्स्ट वर्जन था, बट यू कैन से मैच्योर होने में उसको 3-4 महीने लगे थे. तो रफली अराउंड अक्टूबर नवंबर इट गॉट लिटिल मैच्योर्ड. तो डेस्कटॉप का प्रोडक्ट कॉस्टलियर था. वी वर सेलिंग इट अराउंड 2000 रुपीज अ ईयर. तो दीज टू फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड. उसमें फीचर्स भी ज्यादा होंगे कंपेयर टू मोबाइल. फीचर्स बहुत ज्यादा नहीं थे. फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही थे. वो सिर्फ माइंडसेट का गेम है कि मतलब Indian people, or I would say any country for that matter, मोबाइल की प्रोडक्ट की कॉस्ट हमेशा कम लगती है सोचने में, और अगर डेस्कटॉप या वेब प्रोडक्ट उसकी लगता है कि ज्यादा पे कर देंगे. तो फीचर वाइज मोबाइल और डेस्कटॉप से ही थे, लेकिन बस प्राइसिंग डिफरेंट. Got it. Okay. So then what happened? Like you were at that 40 lakh monthly run. Yes, so we were like around 40 lakh monthly run rate. फिर उसके बाद बीच में इंडिया मार्ट reached out. So I had started. So अब ये सीरीज A राउंड की कहानी है. तो at that time also I started looking out for the next fundraise, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि खाता बुक क्रेडिट ने बहुत फंड रेज कर लिया था. ठीक है, they were like hundreds of crores they had raised, and Khata book was in the same space, like accounting for traders? Yes and no. So I will tell you why yes and why no. So yes, because in the investor community, it was looking like that Khata book has raised a lot of money, and now MSME segment will be acquired by Khata book. Right? No, because the product was very different. We were solving for billing and accounting, and they were solving for credit given and payment received. So they were solving a different use case, which was for a different segment of the MSMEs. And what Vyapar was solving was for a different segment, for a different use case. But when you look from outside, like if you've not seen deeper, everything will look like क्या सब MSMEs के लिए ही है. तो इसलिए वो चैलेंज था, और उसमें बहुत प्रेशर भी आया था हमारे ऊपर कि यार
अब तो बहुत मुश्किल होने वाली है और खाता बुक ने इतना सारा फंड रेज कर लिया है, दे विल एक्वायर द मार्केट सो फास्ट एंड वी विल नॉट हैव स्पेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारे ऊपर प्रेशर भी था कि हम कुछ और करें, या मतलब फंड रेज करें बेसिकली, और एंड वी आल्सो शुड गो फास्टर इन द मार्केट, दैट वाज वन। सेकंड इज कि वी आल्सो ट्राई टू बिल्ड द सिमिलर प्रोडक्ट एंड सी कि अगर वो प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है देन आवर प्रोडक्ट। तो उस प्रेशर में हमने एक्चुअली वो कर भी लिया था, हमने वी क्रेडिट नाम का प्रोडक्ट बनाया। वी क्रेडिट नाम है उसका, हमने रिलीज भी किया था वो। बट वी रियलाइज कि व्हाट वी अंडरस्टूड बाय बिल्डिंग दैट प्रोडक्ट, और 3-4 महीने 5 महीने वो मार्केट में रहा उस प्रोडक्ट को, हम समझ गए कि कहानी एक्चुअली में है क्या, यू नो। अच्छा, क्या है कहानी बताओ। तो कहानी बेसिकली ये है कि उस प्रोडक्ट में हम पहली बात तो एक हवा थी बहुत ज्यादा कि ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है बहुत ज्यादा। तो हमने जब प्रोडक्ट बना लिया वी क्रेडिट और हम मार्केट में गए तो हमें पता चल गया कि वो कहानी गलत है, इट इज नॉट ऑर्गेनिक फॉर श्योर। क्योंकि प्रोडक्ट हमारा बेटर था, फंक्शनैलिटी सेम थी, उसके बावजूद इट वाज नॉट ऑर्गेनिक। तो ये तो मैं श्योर था 100% कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये पैसा खर्च करके। दूसरा, वो फ्री प्रोडक्ट था, उसका लोग पे नहीं करेंगे, ये मुझे बहुत क्लैरिटी हो गई थी उस 4-5 महीने में। तो उसकी मोनेटाइजेशन क्या थी, मतलब they were not lending? monetizing. Okay, but long term we lending and like selling. Probably, I mean nobody was clear at that time, but probably. तो I was bullish on कि मैं ऐसी कोई चीज में हाथ नहीं डालूंगा जिसमें मतलब it is just only burn and there is no revenue। मतलब personally I'm not that kind of a person, मतलब personality वैसी नहीं है मेरी। तो I mean we decided as a company कि हम उस प्रोडक्ट को फिर बस छोड़ देंगे, मतलब we just stopped working on it. It is still there on the Play Store. People download, use it. We sometimes support also, but we don't put any investment there now. So we came back and we started focusing only on Vyapar. तो उस period of time I was trying to raise funds a lot. तो मैंने काफी सारे investors से भी बात किया था. But again the challenge, second time also I faced the same challenge. People were not interested कि यार market हमारा जो टिकट साइज है वो 2,000 रुपए का है, और 2,000 रुपए में अगर 1 लाख कस्टमर भी पेड हो गए तो नहीं रेवेन्यू बना, 20 करोड़, तो 20 करोड़ में क्या ही होता है। So, I mean, the people did not show interest a lot. लेकिन obviously सारे फंड्स को रीच आउट नहीं किया था, बट जितने को रीच आउट किया था उसमें ये चैलेंज आया था हमें। एंड देन इंडिया मार्ट ऑल्सो रीच्ड आउट, एक्चुअली वन ऑफ द पीपल हु रीच्ड आउट वाज इंडिया मार्ट। नाउ इंडिया मार्ट इज इन द MSME segment only, right? They are in this segment. So I think India मार्ट अंडरस्टूड कि यार ये प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है, ये आगे जाके क्या बनेगा। आई थिंक everybody was not getting it. India मार्ट got it. क्योंकि आई एम नॉट वेरी गुड स्टोरी टेलर, राइट? आई एम नॉट कि मैं आपको दिखा सकूँ ये विजन क्या है। आई कैन फील द विजन एंड आई कैन एग्जीक्यूट इट, बट वो सबने दिखाने वाली चीज मेरे अंदर उतनी नहीं है। मतलब दैट इज नॉट माय कोर, दैट इज नॉट माय कोर स्किल, राइट? क्योंकि बाय डिजाइन आई एम एन इंजीनियर। तो probably India might understood, I don't know, and they showed interest, और हमें एक और बेनिफिट दिखा कि वी वर गेटिंग द लाइक माइंडेड पीपल, राइट? दे वर एबल टू, और मतलब बहुत, आई थिंक दे वर द ओनली पीपल जिसको मैंने बताया और अच्छे समझ गए कि हम क्या बात कर रहे हैं। मतलब दे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस मार्केट, दे अंडरस्टैंड हाउ दिस पीपल बिहेव, दे अंडरस्टैंड कि तुम सेल कैसे कर सकते हो। तो मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी मैच करी, एंड देन वी जस्ट डिसाइडेड। Yeah, India Mart has like a very strong connect with that community of traders, manufacturers, and I mean, because they are not just selling purely online, but then they also have people on the street who go and visit, and तो वो definitely वो connect काफी strong है India Mart पे with that. और दिनेश से मैं मिला, दिनेश से मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मतलब he is very humble, and I personally hate arrogant or aggressive people. That is my personal feeling. तो मुझे दिनेश से बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि मेरे टाइप के ही है, मतलब पर्सनालिटी वाइज ऑल्सो। तो हमें सब कुछ पॉजिटिव लगा, तो वी सेड कि ठीक है चलो लेट्स रेज द फंड। ऑब्वियसली देयर वाज क्वेश्चन अराउंड कि यार people will other investors will perceive it as strategic, etc., but I thought doesn't matter for the उसमें प्रॉब्लम क्या है, like so what if it's strategic, मतलब will other investors not invest, then will they think कि अब आप India Mart company हो? ऐसा perception हो सकता है। If the stake is, as the stake increases, that perception can come in.
और जो बाकी इन्वेस्टर्स से हम बात कर रहे थे तो उनका भी ये था कि ये पॉसिबिलिटी है, ये चैलेंज आ सकता है फ्यूचर में। बट फिर वहाँ पे क्या हुआ कि जब इंडिया मार्ट से हमने बात किया तो दे लुक एट इज कि आप प्योरली फाइनेंशियल इन्वेस्टर है, वी विल नॉट गेट इनटू योर स्ट्रेटेजिक प्ले। Strategic will be alignment that we will see. That is not something that we are getting into for. And they're very, क्योंकि वो फाउंडर टू फाउंडर टाइप का था, मतलब एवरीबडी अंडरस्टैंड जब when somebody is building a company, the vision is कि I want to make it large, right? At least for me, क्योंकि अब हर किसी के लिए ना हो, मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं सेल आउट करके निकलूं। मुझे तो ये the reason I'm building this company is it's going to stay for 100 years, right? It has to stay beyond my lifespan. That is the goal, right? तो आई एम वेरी क्लियर कि मुझे कंपनी सेल आउट नहीं करनी है, वेरी क्लियर कि मुझे कंपनी आईपीओ ले जाके और इसको स्टेज पे लेके जाना है कि ये 100 साल तक 200 साल तक अब एमएसएमईज को सर्व करती रहेगी। If you like to hear stories of founders, then we have tons of great stories from entrepreneurs who have built billion-dollar businesses. Just search for the Founder Thesis podcast on any audio streaming app like Spotify, Gaana, Apple Podcasts, and subscribe to the show. Okay. And नहीं मैं वही पूछ रहा था, so how much did they invest and like more Sure. details? At that time, the investment happened and we raised around 36 crores total. सेकेंड राउंड हमारा $5 million का हुआ था, टोटल 36 crores का इन्वेस्टमेंट था। फिर उसमें मतलब मेजोरिटी इंडिया मार्ट ने इन्वेस्ट किया एंड आवर अदर ओल्डर इन्वेस्टर्स आल्सो पार्टिसिपेटेड। तो मतलब people had belief कि व्यापार will do something in future, but I mean old investors did not had that capacity कि उतना large investment कर सके, right? So we had to get somebody who can do larger investment. So that's how it happened at that 2019 सितंबर में हमने ये फंड रेज किया था इंडिया मार्ट के आईपीओ के जस्ट बाद। Okay. हाँ, right. The IPO happened. ये just around जून में, that. Okay. आई थिंक अगस्त में आईपीओ हुआ था इंडिया मार्ट का एंड आफ्टर दैट वी लिस्ट किया। तो उसके बाद की ट्रेजेक्ट्री उसके बाद की ट्रेजेक्ट्री बहुत ही वो इंटरेस्टिंग रही है। तो पहले मैं एक लाइनर बोलता हूँ एंड देन वी विल कम टू द जर्नी। तो लाइनर इसकी उस समय जब हमने इंडिया मार्ट से फंड रेज किया, वी वर एट लाइक 40 lakhs a month ऑफ रेवेन्यू रफली। और अभी हम लोग 2.25 करोड़ महीने का रेवेन्यू करते हैं। Wow, amazing. तो Okay. those Which is again like 4x, more than 4.5x, like in that correct 2-year period. correct Amazing. correct Okay. तो now the journey is obviously 2020 तक नॉर्मल चीजें जा रही थी, फिर सडनली कोविड हो गया। कोविड आने के बाद थिंग्स चेंज्ड ड्रास्टिकली, ऑब्वियसली रेवेन्यूज वेंट डाउन एंड देन व्हेन लॉकडाउन ओपनड अप बिजनेसेस स्टार्टेड अगेन। तो हमारा अडॉप्शन बढ़ा है, टू बी ऑनेस्ट। एवरी टाइम लॉकडाउन हैपेंस एंड इट ओपन्स आफ्टर दैट, तो अडॉप्शन बढ़ जाता है। दैट्स व्हाट वी हैव सीन। Okay. Because वो पेन पेपर रिकॉर्ड नहीं चलेगा, वो आई थिंक वो क्लियर हो जाता है फिर एंटरप्रेन्योर्स एंड लाइक ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन को वो क्लियर हो जाता है, बिकॉज अब वो ऑफिस में नहीं बैठे हैं बट उनको फिर भी पूरे रिकॉर्ड चाहिए एक्सेस। कुछ माइंडसेट भी चेंज होता है थोड़ा। दे आल्सो अंडरस्टैंड कि मुझे इस तरह की सिचुएशन के लिए भी रेडी रहना है। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम बिजनेस तो जाकर नहीं कर पाते हैं, बट दे हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि उस सिचुएशन को मैं हैंडल करने के लिए रेडी रहूंगा तो बेटर है, क्योंकि अब कभी भी हो सकता है वो सिचुएशन। यू डोंट नो, राइट? उसके पहले कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि पूरा कंट्री महीनों के लिए बंद हो जाएगा, बट नाउ पीपल आर सीइंग दैट। तो आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई पीपल आर चेंजिंग। तो अडॉप्शन काफी इंक्रीज हो गया है, डिजिटल अडॉप्शन इज हाई, पीपल हैव स्टार्टेड showing focus towards it. तो थिंग्स हैव चेंज्ड एंड वी आर ऑल्सो ग्रोइंग एज अ कंपनी। हम लोग भी काफी इवॉल्व हुए इंडिया मार्ट के आने के बाद से। इंडिया मार्ट से काफी कुछ गाइडेंस मिला कि what we were missing in the business, क्या हमें करने की जरूरत थी। जैसे एग्जांपल है कि सेल्स, तो वी वर ट्राइंग टू डू इट एवरीथिंग ओनली थ्रू द प्रोडक्ट। देखिए, जब इंडिया मार्ट से जो गाइडेंस मिला वो था कि सेल्स टीम होना जरूरी है, सेल्स नहीं करोगे तो वो कन्वर्जन परसेंटेज कम रहेगा। व्हेन वी एक्सपेरिमेंटेड विद दैट, वी सॉ गुड रिजल्ट्स। तो फिर वो सेल्स वाला कल्चर भी आना शुरू हो गया। So every partner who comes into the journey where they bring something in, and that helps to improve and make the company better. That's what I see. Well, what did you how did you figure out के
in-person sales से मतलब like is worth it? Like did you hire someone and paid him, let's say, 6 lakh at annual salary, and then you realize कि ये 6 लाख annual salary में मुझे increase of revenue of 18 लाख हो रहा है, या क्या था मतलब वो you know, how did you crack that? फील्ड सेल्स नहीं किया था, इनसाइड सेल्स ट्राई किया था पहले। तो इनसाइड सेल्स में हमने कहा कि जितने भी डेस्कटॉप यूजर्स आते हैं उन सबको हम कॉल करेंगे और कॉल करके देखेंगे कि जितने लोगों को हमने कॉल किया उसमें से कितने लोग कन्वर्ट हो गए, मतलब पेड में कन्वर्ट हो। तो अभी तक हम कॉल नहीं कर रहे थे एक भी कस्टमर को पे करने के लिए या प्रोडक्ट समझाने के लिए। इट वाज ऑल कंप्लीटली सेल्फ सर्व, राइट। फिर फील्ड सेल सॉरी इनसाइड सेल्स लाने के बाद हमने पहले तो ऑब्वियसली 2-3 लोग उसमें हायर किए। द पर्पस वाज टू सी कि इंक्रीमेंट इन कन्वर्जन परसेंटेज होता है कि नहीं, दैट वाज द मेन। तो हमने देखा कि जितने लोग कॉल कर रहे हैं उसका परसेंटेज कन्वर्जन जैसे 8% बिना कॉल किए होता है, तो कॉल करके 12% हो गया, तो मतलब ऑलमोस्ट 50% का जंप हो जाता है। तो देन वी सेड कि हाँ ये काम तो करता है फॉर श्योर, एंड देन वी स्टार्टेड। तो ये तो बेसिक टेस्ट है, राइट। नाउ देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। आप प्रोसेस बनाओगे, उसके पिच की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, वर्टिकल वाइज लोगों को समझाएंगे कि किसको क्या पिच करना है। तो दिस लॉट ऑफ ऑप्टिमाइजेशंस दैट यू डू, nitties that have to be solved to make it better. But overall, principally, you know how this works, right? Uh, so that's how we have evolved, and now we have like around 60 people inside sales team, and yeah, and things and obviously conversion percentages, everything has improved drastically. Hmm. Okay. Did you build this team remote or is it sitting in office? So everything is inside office. So we were adding people while in lockdown also. We were onboarding them, we were trying to train them, लेकिन वो प्रोडक्ट हमारा ऐसा है ना कि उस पे ऑनलाइन ट्रेन करना बहुत चैलेंजिंग रहता है, मतलब इट्स वेरी हार्ड टू ट्रेन ऑन ऑनलाइन। तो we used to generally try to get people in office and train them, and सब कुछ in office में, मतलब we have a training room and train here. And how has the product evolved, like you know, from that India Mart funding to where it is So today? now Like उस time पे क्या features थे, and you know, like tell me about that journey, the so product product journey. has definitely been evolving strongly. I mean, irrespective of the India Mart investment, this product had been evolving from the beginning till today, right? Earlier we had like business billing, inventory management, accounting, and basic accounting and the GST reports, right? Now inside billing there are so many additional capabilities that we have added, like transportation management inside that. People can manage automatic transaction messages are there. Basically, if you create an invoice, automatic message goes to the party. Then your sharing of invoices on Like helping in payment payment collection. collection. Inventory management has become very deep. They can manage batch-wise items, serial-wise item. People can maintain. E-way bill they can generate. We have created online store. People can create their online store with a click of a button. Uh, you know, Okay, okay. Which is linked to their yes. inventory, and वहीं पे वो order receive कर सकते हैं, payment उसी में हो processing में जाएगा। उसी में हो जाएगी, and Exactly. Right. On the GST side, reports have matured a lot. A lot of reports got added for business insights. So there are a lot of things that keep getting added into the product based on what people need, right? GST verification हो जाता है। अब अगर GST किसी का चेक करना है तो there's a last problem, right? कि GST wrong enter हो जाता है. You validate that immediately and tell the customer. So a lot of these kind of things we add. But I mean, if you ask me very broadly, bird's eye view, billing, inventory management, accounting, GST. These 4 things that we are doing and going deep into it so that we solve all the categories for all the categories of the business. okay. So as a business owner personally, one of the big hassles I find in accounting is the data entry. Have you done something to reduce that burden of entering data to maintain? So data entry में 2 pieces हैं. Data entry में one is key purchases. See, as a business owner, you have to enter 3 things, to be honest, right? One is you have to enter your sales, you have to enter your purchases, and you have to enter your expenses. As a business owner, there is nothing 4th thing that you will do mostly, right? Because everything is linked to these 3 things.
तो सेल का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बिकॉज व्हेन सेल इज हैपनिंग यू हैव टू क्रिएट द बिल, नोबडी एल्स कैन डू इट, राइट? हाँ, तो हाँ, वो तो बाय वर्च्यू ऑफ बिल क्रिएशन उसका डेटा एंट्री। परचेज और एक्सपेंस के लिए हम लोग कुछ बिल्ड कर रहे हैं, वेयर वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द इकोसिस्टम विद इन व्यापार यूजर्स, या सो ओके। तो इफ वन व्यापार यूजर इज रेजिंग एन सेल्स इनवॉइस, तो उसका जो कस्टमर है उसकी ऐप में वो परचेज इनवॉइस की तरह उसकी एंट्री automatically हो जाएगी, and he doesn't need to enter the data, and then even the payment can happen. Exactly. Okay, So I mean, this is a time-taking journey, but it is a new world that we are trying to create within the MSME segment, which is like a big network of MSMEs. Because on an average, every business works with 20 other businesses. That is an average. So the bigger the network, the stronger the ecosystem. So does this network effect help you? Like, one MSME works with 20 other MSMEs. So every time you onboard one MSME, he would enter details of his vendors, and would that help you to acquire more customers? Like, is there a flywheel? Yes, definitely. In lot of cases, it helps a lot. I mean, when we talk to our customers, lot of people say it's hard to measure. I'll tell you why it is hard to measure, because let's say I create a bill for you. You will receive on WhatsApp. Now you look at Vyapar. What you will do is you will go to web or Play Store. You will search Vyapar and download. So when I ask you, you will tell me that I downloaded from Play Store, and I came to know about Vyapar from because I got a bill. But when I look, अच्छा, बिल में व्यापार का नाम लिखा होता है क्या? correct. But when I look at my data, it will not be possible for me to figure out how did you come. Right? You might have clicked on the paid ad. You might have clicked on the third-party website where you saw the ad, etc. So when we ask people, most of them say कि या तो मुझे किसी फ्रेंड ने बताया था, या फिर मुझे एक बिल मिला था मेरे एक वेंडर से या पार्टी से, तो मैंने देखा तो मैंने डाउनलोड करके ट्राई किया. So I believe that is getting built. It's not measured very strongly with data, but अगर हम सर्वे करेंगे तो we will see a different number. तो अभी बेसिकली उसका जो सेल्स साइड ऑफ दैट बिजनेस इज आल्सो एडवर्टाइजिंग व्यापार, क्योंकि वो जिसको भी बेच रहा है उसको इनवॉइस भेजेगा, उसमें व्यापार की ब्रांडिंग जाएगी. ओके ओके ओके. एंड व्हाट अबाउट द परचेजिंग साइड ऑफ द बिजनेस? लाइक फॉर एग्जांपल यू कुड डू समथिंग के आपको इनवॉइस सबमिट करना है, तो आपको एक लॉगिन मिल गया व्यापार का जहाँ पे आप जाके इनवॉइस सबमिट करो और समथिंग लाइक दैट. तो क्या करते हैं, परचेज वाली साइड पे भी भेजते हैं. लेट्स से आई एंटर अ परचेज, आई हैव डन अ परचेज फ्रॉम यू, आई एंटर अ परचेज, still you will get a message ki you have sold this many items to Sumit. So दोनों साइड को इंट्रोड्यूस करते हैं, that we do anyway. So that is the reason why we are, this is growing well. This is one of the reasons I would say. Right. Okay. And do you have like a WhatsApp integration, like through chatbots and all of that? Yeah. The person will just click share on the Vyapar app और वो फिर attachment जो है वो WhatsApp में के through share करेगा. तो दोनों automated भी है और manual भी है. So if let's say I create an invoice for you, I will enter your name, your phone number, and when I save the bill, you will automatically receive the bill from Vyapar side. Ki Sumit has created a bill for you, and there's the bill and there's the amount that you have to pay. Like that, you will get on WhatsApp automatically. I can share manually also. Manually जब मैं करूँगा तो मेरे फोन नंबर से जाएगा, और अगर ऑटोमेटिक आएगा तो व्यापार के अकाउंट से आएगा. ओके. एंड वो फिर पेमेंट का रिमाइंडर भी वो दैट मतलब उसके लिए रूल सेट कर सकते हो आप प्रोबेबली, लाइक एज अ बिजनेस ओनर के 10 दिन बाद रिमाइंडर, एंड वो रिमाइंडर ऑटोमेटिक व्यापार से जा सकता है. Correct, exactly. So yeah, it's business. MSME is a very deep segment. I personally believe we have not even scratched the surface. There is huge potential in this segment to solve a lot of problems, and a lot of use cases are there, which people are still looking for. I would say a lot of companies should come into MSME segment and pick up one problem and try to solve. क्योंकि opportunity बहुत high है. Right. Okay. So
are you also trying to do the other monetizations like lending and selling insurance and yeah, even like processing payments percentage on that? Yeah, issuing credit cards. मतलब MSMEs typically struggle to get credit cards, and again, I'm speaking as a MSME founder only. Like credit card मिलना काफी मुश्किल था. Ab there are many startups, so they've made it easier, but it like 2 years back it was very tough to get a Right. credit. तो अभी हम लोग उस डायरेक्शन में जा नहीं रहे हैं. मतलब we there's something that we will do, but over the little ahead in the journey. क्योंकि अभी it is there's a lot of things to do within the product itself, and we have not built payment, we have not built banking, we have not built staff management, we have not built for manufacturing. Service business में और improvements हैं. So there is lot to build in the product itself which can improve the life even better. So credit वाला credit and other use cases will be there, but probably little more down the line. Probably one more year. Okay. What are these things that you want to build? You said you want to build banking. Banking बैंक reconciliation. जैसे आपको amount payment बैंक में आया, now ये किस invoice के लिए है, उस invoice को set off करना. So all that is manual work today, right? So all that. Okay. वो data entry eliminate So करना. all that data entry will get eliminated, and your accounting will get more streamlined basically. And again, automation is the key here. कि जितना ज़्यादा automate करेंगे उतना ज़्यादा product. मतलब अब basic सी चीज़ है कि getting a bank statement, ये भी आजकल के मतलब MSME segment जिसके बात कर रहे हैं वो भी difficult होता है, क्योंकि on banks website it is lot of times hard to find कि मेरा last financial year का मुझे statement चाहिए, तो मैं कैसे निकालूं? Especially PSU banks में, their websites are very, very difficult to use. But can you integrate with a PSU bank so that you can fetch There are mechanisms to do that. We are working on that. मतलब there are okay. So what's on the roadmap? Like, so as I said, like next 2 years. Payments is something we are going to do. Banking. Payments means के invoice में एक link चला जाएगा for people to pay. या QR code होगा where they can scan and do a UPI payment or something. Payments, banking, POS, staff management, manufacturing. POS like you will provide card machine. POS means जैसे restaurant में आप देखते हो ना कि टक item select किया और bill बनाया, right? Like that kind of behavior with integrated with billing it. Okay. Barcode scanner, etc. So that is for which category? क्योंकि वो हर category में POS है. Retailer के लिए. Okay. Like a किराना store. तो मतलब अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ है सेम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए. तो what else? Like POS? Yeah, POS, manufacturing unit. Manufacturing itself is a very, very deep use case. Tax filing, integration with GST portals. Manufacturing में क्या मतलब what is there which you don't? So manufacturing में basic चीज होती है raw material management. कि basically you are purchasing let's say 3 items and you are selling some new finished product. So there are steps to convert that, right? तो पहला स्टेज होता है कि टेक दैट 2-3 प्रोडक्ट्स, फिर आप मशीन में डालोगे, फिर वो मशीन से कुछ निकलेगा, फिर कोई जॉब वर्क के लिए जाएगा, फिर वहां से आएगा. तो ऑल दैट देन डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग आर डिफरेंट प्रोसेस. बिल्डिंग दैट फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द बिजनेस कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कि सब मैन्युफैक्चरर्स उस मॉड्यूल को यूज कर पाए. Okay, so like a workflow automation for manufacturers जिसमें वो डिफाइन कर सकते हैं कि मेरी प्रोडक्शन का ये वर्कफ्लो है, एंड देन वो ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा कितने फिनिश गुड्स हैं, कितने सेमी फिनिश गुड्स हैं, क्या चीज कहाँ अटकी हुई है, बॉटल नेक कहाँ पर है. Exactly. Okay. Which would be a pretty high value product then, ना? क्योंकि I mean this would not be like a 3,000 rupees. 100% high value. It depends on the size of the business also. Let's say अगर हम बहुत डीप जितना डीप बनाते जाएंगे उतना ज्यादा कॉस्ट मतलब size of the manufacturing will also increase, that will need it, and the pay of the product cost will also increase accordingly. और जो छोटा बिजनेस होगा, अगर आप एक आटा चक्की उठाओ जो कि गेहूं खरीदता है और आप पीस के आटा दे देता है, right? That is also a manufacturing unit because it is buying something else and selling something else. लेकिन उसके लिए simpler होगा product. उसको need कम. Yes, right. तो Okay.
Yeah. What else? Staff, Manufacturing. yeah, This staff, covers staff the. management, payroll, Okay. Like leave leave time attendance, attendance, like all of that. Okay. Payroll. delivery, Okay. product delivery, tracking and automation of that. How So how let's say I am a manufacturer, right? I deliver my products to my wholesalers or distributors through a transporter, right? तो मेरा कौन सा आइटम कितना डिलीवर हो चुका है, कितना रास्ते में है, किस किस पार्टनर के साथ डिलीवर होना शुरू हुआ, मैनेजिंग दैट ऑल डिलीवरी पीसेस ऑफ द बिजनेस, राइट? उसका कितना खर्च हुआ, उसके कॉस्ट अकाउंटिंग इनटू द प्रोडक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट। तो इनफाइनाइट चीजें हैं, मतलब अगर हम सोचने बैठेंगे तो देर आर लाइक टू मेनी थिंग्स टू डू। वर्टिकल में चेंज होती रहती है। इफ यू गो टू गारमेंट्स तो डिफरेंट है, मेडिकल में जाओगे तो डिफरेंट है। तो अभी there's so much to do. Okay. So this network of MSMEs that you have, uh, are you like uh, leveraging by helping commerce happen between them? Not right now. Like, say logistics के लिए you could, for example, offer logistics services. So MSMEs which offer logistics services then also get business from Vyapar, because Vyapar customers who need logistics would give them business. And matlab, there's just one example, but there Sure. could be so many such use cases of commerce between the customers. Definitely. See, in future we might get into the B2B marketplace kind of a thing which you are talking about. जैसे अभी हम individual online stores बना रहे हैं. A lot of people are transacting and getting orders through online store that they have created on Vyapar, right? In future we might Which in a way is a competition to India Mart. मतलब have, but it is okay क्योंकि बहुत large. I mean the scale is very different, and right, so it doesn't matter. I mean ना हमें उतना फर्क पड़ेगा उस चीज से, ना इंडिया मार्ट को उतना फर्क पड़ेगा उस चीज से. And it is actually a good thing because we might, I would look at it as a positive way, because we might even cross pollinate to see how we can leverage each other's platform. You know? So Yes, absolutely. Yes, it's like your stores getting listed on India Mart. That would be very powerful. right? So the if the purpose is common, right? The purpose is to provide good service to the MSMEs and help them build and grow their business. Then everything will align. Rest everything is more of alignment and figuring out. Okay. So, do you plan to raise further funds, or what's the plan on the fund? So we will definitely raise funds. We will need the next round of fund to be raised to grow the business to the next level. Okay, we 2.25 crore पे है, and we have to take the business to the next like 10 crore वाला. So yes, funds will be required and we will raise. उसका short answer है. According to you, the other players in this field, are any of them making as much revenue as you? Because आपका focus हमेशा से ही revenue में रहा है, तो अभी तो नहीं. मतलब nobody else is making that kind of revenue जो आपकी अभी है, because of your focus. अभी तो नहीं. And the other thing is that कि मतलब I think we will be the only company जिसने 42 करोड़ रेज करके 25-26 करोड़ के ARR का बिजनेस बनाया होगा. और बर्न तो खैर सेकेंडरी है, वो तो और ही कम है. तो बहुत मतलब इंडिया में मतलब गिनी चुनी कंपनी होंगी जिसने किया होगा. तो obviously this is not very motivating from the investors perspective if you look at it, क्योंकि investors look at it from a different, I mean, see, everybody has a different way of looking, right? In these things there is no right and wrong. These are different ways of looking. But how would an investor? So investors view will be your customer base and revenue should grow. Expand कितना कर रहे हो, that is secondary. Okay. तो वो spend देखते ही नहीं है, मतलब they will just see growth की speed, हाँ, growth की speed आपकी कितनी है, that matters more than how much you are burning to grow. लेकिन मैं ऐसे कर नहीं सकता, मतलब मेरे खून में नहीं है, तो वो प्रॉब्लम है. So, what's your advice to young aspiring founders, people who are thinking of doing something of their own? Like, what are some recommendations you would like to give them?
recommendations, they see, entrepreneurial journey is very different for everybody, right? I mean, everybody has a different way of building it. I would say there are multiple stages of a company, right? If you ask me what is the most important skill that you need when you are building a company, so I personally believe one of the founders, at least one of the founders, should have people skills. वो super critical है. क्योंकि company building a company is more about people than anything else actually. That's what I have seen in my journey so far. It's more than 70% about people, and rest 30% is about idea, execution, uh, brainstorm, I mean, fundraise, etc., etc. Because in the end, founder can do only, you have only 24 hours, right? You cannot do much. Whatever has to be done is through your relationship with others who are working in your company, who are working with you, right? And building the culture, right culture of the company. So all those things matter a lot. In my opinion, I mean, I'm from Intuit culture, so I believe in that. जब मैं IQ के पास गया था, नॉट IQ, एक्सिलॉर में जब गया था, तो एक्सिलॉर एट दैट टाइम आई वाज लाइक 12 लाख का रेवेन्यू कर रहे थे, बहुत अर्ली स्टेज में थे. एट दैट टाइम ऑल्सो आई थिंक व्हेन आशुतोष asked me, Ashutosh is the person who was running the program at Exilor. At that time, I was like, I want to build a company like Intuit with a strong culture and strong market and with customer obsession. बाकी चीजें can be figured out. Right? So my first advice will be कि people skills बहुत जरूरी है कि you are good relationship with people, good feeling for others, positive mind. तो ये एक important. Second most important is perseverance. कि failures तो होंगे, उसका कोई मतलब it's कितना भी bond कोई हो, challenges और failures आएंगे ही life में. It's unconditional, होना ही है. तो how do you deal with that is second. Perseverance बहुत जरूरी है, but वो perseverance जो है ना, वो एक बहुत महीन धागा है. तो I'll tell you why I'm calling that out. कोई एक चीज अगर काम नहीं कर रही है, let's say working on an idea and it is not working, right? तो अगर मैं उस पर लगा रहा हूँ, that is also perseverance. Yeah, But it is not. finished. Yes. Yeah. So there is a point where you have to decide कि ये नहीं काम कर रहा है and I should move out. You know. So when I say perseverance, I generally say it with a pinch of salt, क्योंकि उसको wrong way में ना कोई ले. Perseverance means कि when you believe something and you are sure it will work, then you keep trying it. But एक दिन आपको अंदर से मालूम हो जाता है कि यार ये नहीं काम करने वाला. तो जब अंदर से फील हो जाए कि नहीं करने वाला, तो छोड़ देना चाहिए. ईगो पे नहीं लेना चाहिए. So what is the head count today of Around Vyapar? 330 people. Okay, quite big. And so how do you do like culture building and organization building and drilling customer obsession down to the lowest level? How do you manage? Like 330 is fairly large number of people to manage. So in an organization like this, right? The way I personally do it, and that I'm sure that is the only way to do it anyway, is you define the first principles and find out how you can convert those first principles into matrices, right? And if you cannot convert into matrices, then you keep talking about it as many times as you can. I'll give you very, very simple, transparent examples. One thing, when I talk to anyone, right, anybody who's joining new in our HR sessions, or I also talk to every every support agent, sales agent who is joining the company. So we hire in the batches, and every batch I talk to, two things I call out very explicitly. One is that our company has highest level of transparency. When I say transparency, it basically means that you can come and ask about each and everything except salaries of people. Except that if you come and ask me anything about the company happening, कितना हम budget spend कर रहे हैं, कितनी marketing कर रहे हैं, anybody can ask anything. That is one. Second thing I call out very explicitly, that everybody is equal in the company. There is no senior, junior. Only roles and responsibilities are different. Okay? तो कोई हर मैनेजर से मैं एक्सप्लिसिटली मीटिंग करता हूँ एंड मेक श्योर कि उसको ये समझ में आ जाए
कि you are not greater than your reportee. You are equal to that person. It is just that your role is to manage and his role is to execute. Right? And I'm very, very strict and stringent about कि कोई भी किसी से गलत तरीके से बात नहीं करेगा. There will be nobody who will be rude to anyone. Right? If you feel that somebody has not done right, you escalate it in the right manner and solve it. No shouting, rudeness, nothing that is not acceptable. So those kind of things that I do very strongly. Coming to customer obsession, the way we do it is when I meet these guys, right, who are customer facing, I always tell them कि मतलब वो हमारा एक सेट पैटर्न है जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनाया है, एक्सप्लेनिंग देम कि वो दीज बिजनेसेस आर. आई टेल देम कि यार ये बिजनेसेस एक्चुअली कोई और नहीं है, ये वही लोग हैं जो हमारे, ये तो हम लोग के फादर हैं, ब्रदर हैं, वही लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, एंड वी आर वर्किंग टू हेल्प देम. तो व्यापार इज वन फैमिली एंड दिस इज आवर एक्सटेंडेड फैमिली. To make sure when you are talking to any one of them, that is one of our family members. और वैसे मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस आप कैसे मेंटेन करते हैं कि जो भी कस्टमर सपोर्ट में कॉल आता है, एवरी कॉल, आफ्टर एवरी कॉल देयर इज अ मैसेज गोज टू द कस्टमर एंड वी मेक श्योर दैट आवर एवरेज रेटिंग फ्रॉम कस्टमर इज 4.8 आउट ऑफ 5. तो हमारा मतलब वी आर ऑलरेडी रनिंग एट 4.8 कंसिस्टेंटली फॉर ईयर्स. तो customer support, the strong customer support build करना is very critical. Actually, you were saying something. Sorry. Like a customer can ask for support at any time, even during the trial period, and yes. like जब भी कोई problem हो, they can just call and get instant support. कभी भी कोई भी मोबाइल यूजर, डेस्कटॉप यूजर कभी भी कॉल कर सकता है. We have hours 9 to 9 Monday to Sunday, all 7 days, and customer can call anytime. And all customer will get the same help. ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है, पेड कस्टमर तो ज्यादा फायदा मिलेगा और फ्री कस्टमर तो उसको हेल्प नहीं करेंगे ऐसा. तो हाउ आर यू यूजिंग AI/ML in Vyapar? So AI/ML is primarily used in our backend. So we have AI/ML where we try to figure out the user's behavior, and based on that behavior, we recommend features to our existing customers. Right? If let's say somebody has used 5 features, then based on the behavior of a lot of other users, we know that this person is going to need 6. This is the 6 feature that he will need. Right, so we are solving discoverability using that. Plus, we are nudging users to purchase a product who have reached that level of engagement through AI. Because mobile is a very self-serve product. Mobile, we cannot call every customer. That will be not cost effective. Right. So, for specifically for mobile, we use these kind of mechanisms. Then, for internal efficiency, we use AI and ML. We predict that which month is going to have more number of calls, so we increase our support team strength based on that. Then for the sales, which customers they should call first, which they should call next. That is, again prioritized using AI/ML. So these are the places where we do use AI/ML. And are you like a cloud product today or a desktop product? Like एक तो mobile app है, of course, which is on your mobile phone, but for the desktop version. So we have one important point here is that we are the only product in the world which has a hybrid model, which basically means that the product by default, when you start using it, it is completely offline. If you switch on the internet or off or switch it off, you will be able to use it completely. Now this within toggle, that if you want to be online, you click a button and then you become completely online. So you are an online software going from now on. So we strongly believe in the theory of building for the current and prepared for the future. So our solution solve for the current behavior of the users, their current needs, and it is equally prepared for the future, that whenever somebody thinks that I want to use it online, then they can just toggle a button and go online. And because current behavior is offline, क्योंकि मतलब जो लोग tally use करते हैं वो download करके exactly करते हैं, like that exactly. I mean, that's the behavior, and people have still, a lot of people have still financial mindset कि मेरा financial data cloud पे नहीं होना चाहिए, etc. Right? So instead of convincing them कि भाई तुम cloud use कर लो, it's better to provide what they need, and then जब उनका mindset change होगा तो अपने आप ही आ जाएगी. Right? So that's how we have built it. And do you also cater to service businesses, like say an ad agency
which needs an accounting software. Like like Tally is used by everybody or was used by Right. everybody, not today maybe. But so like, how broad is your use case? Like Sure. For us also, it is a similar case. It is very horizontal product. So any type of business can use it, including service. So we have around 10-12% of services business who use Vyapar very comfortable. Hmm. Okay. Like their entire accounting Everything invoice can be will done. be. They can create invoices with items and whatever their services that they're charging for. So within Japan, we have two kind of items that they can create: product or service. So you can create a service product, service type of item and sell it. Hmm. Do you plan to also look at enterprise customers, or you want to stay focused on No, and MSMEs? so if you look at the MSME sector, right, it is broadly divided into four categories: micro, small, medium, and large. Right. Currently, we are focused on the lower section of the small. So we are going up the value chain. We will go slowly up the upper section of the small and then medium. We are not going to go below the small as of now. This is what we are planning to. And that could be very easily figured out from our discussion also earlier, right? The kind of features that I was talking about, payments, banking, etc., that will be required by the upper segment of the business. So, what is like the core differentiation of Vyapar compared to, say, like traditional products like Tally, or like more new age products like, say, Zoho, and of course your former employer, uh, they also have QuickBooks as a product. So what is Vyapar's key differentiation, or how is it different Sure. from them? See, the primary difference between the products is how we have built it. So if you look at any product, Tally, BusyBark, Zoho, QuickBooks, all of these products, if you start using them, you will feel that there is some level of accounting knowledge that you need. If you have zero accounting knowledge, you cannot use it. There will at Tally you will face a lot of challenges, but compared to Zoho, QuickBooks, you will face less. But there will be some level of challenges that you will face if you don't know accounting, right? But Vyapar is built purely for a non-accountant. If you have zero accounting knowledge, you don't even need to know what is debit and credit. You will be able to completely run your business without any problem. That is the USP of Vyapar, right? I'll tell you why that USP is there. The USP is there because there are two reasons. One, we don't know accounting, the product people who have built it. That is so, so the So we don't know accounting. It is not built by. It is not built. The mastermind behind this product is not a CA, and that's why it is. It doesn't have any accounting involved in it. The mind behind it is an engineer. So, and as an engineer, our always mindset is to simplify things, right? So that is one reason. Another reason is that when I saw in my family that nobody was using Tally, I realized that they don't understand accounting and they don't need to know accounting. Their job is to actually run the business. So, so that's the reason why we thought we will build it for the view of a businessman. It is not built from the view of an accountant or CA. So everything from the accounting perspective will be right, but at the back end. तो हमारा जो कस्टमर बेस है वो बिजनेसमैन खुद है या फिर उसका सेल्समैन है, मतलब हमारा गोल है जो छोटू उसकी दुकान में काम करता है ना, जो वो भी बिल बना सके. If you like the Founder Thesis podcast, then do check out our other shows on subjects like marketing, technology, career advice, books, and drama. Visit thepodium.in, that is thepodium.in, for a complete list of all our shows. Before we end the episode, I want to share a bit about my journey as a podcaster. I started podcasting in 2020, and in the last 2 years, I've had the opportunity to interview more than 250 founders who are shaping India's future across sectors. If you also want to speak to the best minds in your field and build an enviable network, then you must consider becoming a podcaster. And the first step to becoming a podcaster starts with Zencaster, which takes care of all the nuts and bolts of podcasting, from remote recording to editing to distribution and finally monetization.
If you are planning to check out the platform, then please show your support for the Founder Thesis podcast by using this link, zen.ai/founder thesis. That's zen.ai/founder thesis.